Welcome back, guys. अगर आप थोड़ी सी information लेना चाह रहे हैं on how to invest in stocks, any saving tips, then this is the segment you should be watching right now. हम रायदा से बात कर रहे हैं about some important key principles जब हम invest करते हैं और क्या common mistakes हैं जो लोग करते हैं. And she was just telling us कि हमारे पास बहुत ज़्यादा information and research available होती है through which we can make informed decisions as well, right? So, can you explain कि dollar cost saving क्या होती है? Basically, we don't go towards that side of investments क्योंकि हम बात कर रहे होते हैं local market में. So when we look at the Pakistan currency, we look at asset classes within the Pakistan market and PKR denominated. Achha. If you peg it to the dollar, तो obviously you'll be looking at that difference all the time. Yeah. And now तो खैर dollar is also in a range bound जब तक पहले 300 को touch कर गया था, वापस आ गया है. But when you look at the stock market या different asset classes जो कि financial sector, documented financial sector में, तो आपके पास एक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट के ऊपर बेसिक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल जिसको समझने के लिए कि अकाउंट कैसे खोलते हैं, ट्यूटोरियल्स हैं. आपके पास वर्चुअल अकाउंट का भी ऑप्शन है where you can actually give yourself money. 10 million, 50 million, and make different portfolios of the actual stocks. Okay. And in the real market time, real market prices. So what is this? Basically, it's a virtual game. Basically. It's a virtual game sort of. You build your portfolio, you learn the. अच्छा, you learn basically. आप practice करें और आप अपने आप को देखें कि जी 6 months में मैंने portfolio A, B और C बनाए. इसमें मैं which portfolio did well. So you can make a blue chip portfolio. You can make one that's day traded and you buy and sell on a daily basis. Daily basis. And एक कोई आप अपना capital gain वाले stocks का बना सकते हैं. And you're actually picking up real stocks from the market. आपने top या sharia compliant portfolio बना लें और फिर देखें how you're faring on those, and that will help you learn कि symbols क्या होते हैं companies के, because हर company का एक symbol है. Yes. ट्रांजैक्शन कैसे होती है, कमीशन कितना कटता है, फिर देन पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कैसे होता है. सो दैट बिट वी क्रिएटेड टोटली, एंड इट्स नॉट लाइक अ कॉन्टेस्ट कि यू गो इन प्ले एंड कम आउट. नो, यू कैन डू इट ओवर 6 months, 1 year, continue. And if you've bought stocks in some point in your life in the past, you can actually map that on it and see कि वो जो पिछला पोर्टफोलियो आपने बनाया था एक्चुअल स्टॉक्स का किस दिन लिया, क्या प्राइस पे लिया और आज उसकी क्या वैल्यू होगी. So you could actually map that as well and see the return you've How interesting. And आपको लगता है कि इस तरह लोगों ने actually सीखा है? आपको लगता है कि मार्केट भरी है, evolve हुई है, लोग आए? I think so, because we've got a good 40-50,000 people on the portfolio जिन्होंने अपना अकाउंट क्रिएट किया है. वर्चुअल अकाउंट है. You're not giving money really. I could literally go one and make one right now. Yes. Right? I mean अभी घर में कोई भी बैठे-बैठे बना सकता है. घर से आप जाएं पोर्टफोलियो, माय वर्चुअल पोर्टफोलियो पे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे भी है और डेटा पोर्टल पे भी है. सो दैट इज़ फॉर द न्यूबीज. ओके, ऑल द थिंग्स यू वांट टू रीड, डूज एंड डोंट्स ऑफ द मार्केट कि जी अकाउंट खोलना किस तरह होता है, ब्रोकर कैसे सिलेक्ट करते हैं, ब्रोकर से क्या कमीशंस आप चार्ज कर सकता है आपको. सो ये सारी चीज़ें वहाँ हैं. Right, and it teaches you how to charge commission and all as well. It's in very layman terms. Very simple. How interesting. I should definitely check it out as well. That is the easy part. Then for the advanced and savvy investors, we have an entire data portal जिसमें आपको 5 साल का डेटा ऑफ ईच कंपनी कि उस कंपनी के क्या फाइनेंशियल से कितना डिविडेंड दिया, क्या प्राइसेस रही. सो इफ़ आई एम लुकिंग एट कोई भी स्टॉक कंपनी ABC, तो मैं उसकी आज की प्राइस वर्सेस इन द लास्ट 5 years क्या प्राइसेस रह चुकी हैं. आई कुड एक्चुअली सी कि कहाँ है इस वक्त, क्या पीक बनाया था. And that's how you invest. That's how and you usually do trends लोग 5 साल के उठाते हैं, 3 साल के उठाते हैं. How do you think is a good time? The long-term investors actually look at the good 5-year historic record. And are you more of a person who will do this on a daily basis, or are you someone who will buy it and leave it and then do it later? Basically, that is the thing. You have to be a good long-term investor. Long-term, right? Because देखें, actually stock exchange है क्या? Companies come on the stock exchange, give out shares, get money from investors. ठीक है? Now, if I've invested in a company जब IPO होता है, तो मैंने बिल्कुल primary market में किया. उसके बाद क्या होता है? Companies takes that money, deploys it,
makes money and passes it on profits के dividends की सूरत में. एक और एस्पेक्ट होता है कैपिटल गेन का, जो डेली प्राइसेस इंप्रूव होती हैं, कंपनीज डू वेल, अच्छी अनाउंसमेंट्स आती हैं तो देन द प्राइसेस इंप्रूव. इफ दे डोंट हैव गुड अनाउंसमेंट्स देन द प्राइसेस वुड डू, यू नो, सेंटिमेंट. But if you are associated with a company for the longer term, you get the benefit of dividends. कुछ companies quarterly देती हैं, and it's about buying good stocks, holding them for a long time. And the money keeps falling into your account every time you get a dividend. It's like a bonus every quarter आपको मिल रहा होता है या 6 months में मिलता है. Of course. And like Raeda, how much do you think women, like let's say hypothetically, let's take me as an example. मैं जाती हूँ, मैं virtual portfolio खोलती हूँ, बनाती हूँ, and I start playing with it, and I start understanding it, and I see the records of 5 years, and I finally started. When do you think, and how much do you think I would end up making? Like this is for my audience as well. जो सुन रहे होंगे, आप कितने टाइम में कितने पैसे बना सकते हो? हाइपोथेटिकल फिगर देखिए, we can't, it depends on your selection. We can't quantify it, but the Karachi Stock Exchange 100 index has given a very good return over 10 years. 35-40% return दे चुका है. अच्छा. So if you look at a longer term, it's very good returns. But it also depends on your selection of companies, how long you've held them, when you've bought those shares, at what price range or price levels have you bought those shares at. So ये सारी factors होते हैं. Sectors हैं. Sometimes there are like 36 sectors right now on the stock exchange. Yeah, and which sector do you think would be doing best right now? There's no one sector because multiple sectors. At times the economy is doing well in certain sectors. So वो particular 5-6-8-10 sectors अच्छा काम कर रहे हैं. And the sectors you understand, you should enter those. Definitely invest in that. हम रायदा से बात कर रहे हैं कि आप इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग किस तरह कर सकते हैं. एंड वंस वी कम बैक हम थोड़े से सेक्टर्स को और एक्सप्लोर करेंगे कि कौन से सेक्टर्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इफ यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट ऑफ. अब हम जा रहे हैं शॉर्ट ब्रेक पे. जब हम वापस आएंगे वील कंटिन्यू.